Today I am going to teach you waterflow painting, and this is our final project. So I am going to teach you this art today. So let's start our class now. Take HB pencil and create drawing. Drawing of bucket, and then flow of water, create design of bucket also. And in left side also create some patterns. And complete the drawing part. So you can use HB pencil for this drawing and complete the drawing process. And after this, take one round brush, for shading work, and outline. This is outline brush, 000 number, you can use it. And after this, I will teach waterflow technique in bottom portion. For bottom portion, we spread water so use your round brush and spread water in bottom portion. You have to apply more water in this area, means in bottom portion use more water and spread this water all over this area. And after this, you can use different poster color: red, purple, orange, yellow and white color. So in this watery area, you have to apply thick coat of color. Just put color in this watery area and see the effect. So use different color in this watery area. And see the effect. Colors automatically mix here. So apply different color here. Even you can use different color. Instead of green color, you can use blue color also. And here I apply some water in white portion, बिकॉज अगर ये ड्राई हो जाएगा तो आपका कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा और फैलेगा नहीं, इसीलिए आपको इसको अच्छे से गीला करके पेपर को यूज़ करना है। तो
यहाँ पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया। And now put white color also for detailing. And use red color. And then use blue color also. ब्लू, पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो को आप यूज़ कर सकते हैं। So observe the technique and complete bottom part of this painting. Now our bottom part is also completed. सारा कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। Then and now keep them aside for a while and let it dry completely. इस पेंटिंग को सूखने को थोड़ा टाइम लगता है और ड्राई होने के बाद ही आप इसमें आगे का वर्क करोगे। So give detailing also. With more color give detailing. जो बॉटम पोर्शन है वो काफ़ी कलरफुल होना चाहिए। So apply thick coat of color. I also use sky blue color. And now let it dry completely. So in your painting, in bottom portion we use waterflow technique. Got it? It is very simple process. Just apply water and spread colors here and leave it for dry. So for your painting I use also masking tape. See, in upper portion and bottom portion I use masking tape, and here if you use masking tape then your painting are stable in one place. Got it? So please use masking tape also for your painting. You can use any plywood or table as a base of painting, and after this apply thick coat of black color in upper portion.
So let it dry completely and then we use white marker. And now just check your painting, it's dry or not. So it's semi dry now. Then use some colors and give detailing. So I use red color and white color for flow of water, and then I apply white color. सो फर्स्ट लेयर के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है एंड उसके बाद मैंने जस्ट वाइट कलर अप्लाई किया, तो ये हल्का सा पिंक शेड ले लेगा. एंड देन मैंने यहाँ पे पैच वर्क किया है. इसके लिए आपको जस्ट ब्रश में रेड कलर लेना है और अप्लाई करना है, और जस्ट उसके बाद आपको सेकेंड लेयर के लिए वाइट कलर यूज़ करना है. एंड देन यूज़ वाइट कलर इन दिस एरिया. जस्ट पैच वर्क करना है. And then wash your brush with water. See the effect of color mixing. And then it's completely dry. Now use marker for creating drawing of bucket. Even you can use white glass pencil. Instead of white marker, you can use white glass pencil also. वाइट ग्लास पेंसिल आपको 10 रुपये की मिल जाएगी मार्केट या कोई अच्छी बड़ी स्टेशनरी शॉप में. ये जो मार्कर ये 70 रुपीज़ का आता है. तो आप इवन वाइट ऑयल पेस्टल का भी यूज़ कर सकते हो. वाइट ऑयल पेस्टल या वाइट कलर पेंसिल. और अगर वाइट ग्लास पेंसिल यूज़ करते हो तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आता है. और बेस्ट है कि आप वाइटनर भी यूज़ कर सकते हो. अगर घर पे वाइटनर अवेलेबल है देन यू कैन यूज़ वाइटनर. सो आई यूज़ कैलीग्राफी वाइट मार्कर हियर and create the design of bucket. And then after completion of this bucket, you can create some stars with marker. So give patchwork of star also. So create some more stars.
So this project is done now.